What's up, everyone? Thanks for joining the stream. And I'm Nilesh Shetty, and you're watching Nilesh Shetty Live. This is where we live stream every day. Daily live stream. करंट अफेयर्स पे, जियो पॉलिटिकल इशूज़ पे, फिजियोलॉसफी पे, हर चीज़ पे हम लोग बात करते हैं. हम लोग इंटेलिजेंट डिस्कशंस करते हैं. हम लोग थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस करते हैं. हम लोग दिमाग पे जोर डालने वाली बातें करते हैं. हम लोग गहरी बातें करते हैं. हम लोग कई बार तो डूब ही जाते हैं उन बातों में. कई बार खो जाते हैं उन बातों में, उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं. लेकिन फिर भी स्ट्रीम के एंड तक जैसे तैसे इधर उधर चल के, तैर के, कूद के, गिर के निकल आते हैं. And that's the stream. And we do it every day. So this is not just a stream. It's how do you describe it? It's like a exercise in constant unpausing growth, which is so rare these days. It is amazing what we are able to do here. And I'm saying that जो connection है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है अभी YouTube में, because it's jealous of the kind of things we talk about, of the things we do, of the things we say, of the things we listen, of the things we read, of the things we sing, on the dance we dance, on our movement. It is jealous. That's all it is. क्या हाल है शुभदीप? How are you? Thanks for joining stream, buddy. Are you ready to get your mind twisted? Are you gonna be the kind of person who listens and repeats the narratives, or are you gonna be the kind of person who has his mind open and experience the entire world through the openness of their mind? Or are you gonna be like everyone else? क्या लगे? Thanks for joining, somebody. The life is yours to live, the decision is yours to make, but the decision you're about to make is the decision for decisions. Are you gonna make the rest of the decisions for yourself? Are you gonna let the world make those decisions for you? Are you gonna live for love, for ambition, or are you going to live purely out of fear? That decision is up to you. I cannot tell you what to choose, because it goes fundamentally against what I'm saying right now. I might tell you what to choose some other day, some other time, maybe 5 minutes from now, maybe 5 years from now, maybe 5 decades from now, or maybe 5 centuries from now. Maybe I will then. But right now, no. Right now you have to make your own decision. You have to take control of your own life. Take some responsibility. Hello, Hume. How are you? Thanks for joining the stream. Hume, thanks for joining the stream. क्या चल रहा है ह्यूम? गे और शुभदीप, तुम भी बताओ. कोक और कोक. Hello everyone. Hello Malika Hind. How are you? Thanks for joining the stream. सब ठीक? आप बताओ. Not too bad. Thanks for asking. A little tired, लेकिन ज़्यादा नहीं. अभी मैं सबके दिमाग खोल रहा था. So like the first 5 minutes of the stream, you guys, you missed gold, but it's okay.
A long time no see, Malika Hind. Where the fuck were you? Where were you? What the fuck? Video caused a huge controversy. I don't give a shit about a huge controversy, but what else? Oh, gay, क्या बात है? देख रहा है अलग से चमक रहा है. ये बात सही करा तूने, याद रखी ये बात. तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट एंड समय रायना के बारे में. तो रणवीर अलाबादिया एंड कुणाल कामरा के लफड़ा ओवर द लेटेंट टॉपिक पर फ्लाइंग बीस्ट भी अपना ओपिनियन देते हुए कहे कि समय का भी उसमें क्या किस किस का लफड़ा हो गया? मैंने तो सुना ही नहीं. शिट, स्लीप शेड्यूल सही कर रही थी. अरे नाइस नाइस नाइस. क्या हुआ फिर? आज मैं सुबह 6 बजे से उठी हूँ. पता नहीं कितनी देर लाइव रह पाऊंगी. मैं भी ज़्यादा देर नहीं रह पाऊंगा. डोंट वरी हूँ. छोटी सी स्ट्रीम. व्हाट? नहीं हुआ सही बेटा. मुझे ये बता मलिका हिंद, इज देयर अ लॉ अगेंस्ट मी स्मैकिंग यू अक्रॉस द फेस थ्रू द स्क्रीन? इज देयर अ लॉ अगेंस्ट दैट? तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट एंड समय रायना के बारे में. तो रणवीर अलाबादिया एंड कुणाल कामरा के लफड़ा ओवर द लेटेंट टॉपिक पर फ्लाइंग बीस्ट भी अपना ओपिनियन देते हुए कहे कि समय का भी उसमें गलती था. यस गाइस, कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे रणवीर एक ट्वीट किए थे रिगार्डिंग द लेटेंट कंट्रोवर्सी, जिस पर कुणाल कामरा उनकी स्टूपिडिटी को कॉल आउट करते हुए उन्हें स्लैम किए थे. वेल, वेट, होल्ड ऑन. What happened? At this point there ain't a law against anything. God. So when can I see you so that I can just how can you not fix your sleep well, okay, I just realized something. चलो एक मस्त चीज़ रिएक्ट ह्यूस्टन जोन्स इसके बाद. ओके, पहले मुझे ये देखना था कि इनकी कंट्रोवर्सी हुई क्या. लाइक रणवीर अलाबादिया एंड फकिंग कुणाल कामरा, लाइक रियली. तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले रणवीर अलाबादिया वर्सेस कुणाल कामरा के बारे में. सो कुणाल कामरा एंड रणवीर अलाबादिया के बीच में एक लफड़ा स्टार्ट हो गया. या गाइस, लेटेंट वाला कंट्रोवर्सी तो आप लोगों को याद ही होगा. रणवीर, आई लव हाउ नियॉन मैन कितना सीरियसली बोलता है सारी चीज़ें. Nobody gives a fuck, but Neon Man is like, रणवीर अलाबादिया और कुणाल कामरा के बीच में एक लफड़ा शुरू हो गया है. क्या लफड़ा है? 2 लोगों ने ट्वीट करा है. यूजुअली अभी मुझे नहीं पता, हो सकता है बहुत ही बड़ा कुछ लफड़ा हो गया. कुणाल कामरा ने जाके थप्पड़ मार दी हूँ या खा लिया हूँ. Who knows? के एक स्टेटमेंट से बहुत सारे लोगों को इश्यूज आ गए थे, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ. तो उस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हुए कल उन्होंने एक ट्वीट किया था. It took me and my team 10 years to build beer biceps and the Ranveer show to where they were, and in one incident a large part of it was shaken. Okay, Paul कह रहा है thanks for running stream buddy. My team 10 years to build beer biceps and the Ranveer show to where they are, and एक इंसिडेंट से a large part of it was. I don't understand this tweet. यानी कि मतलब इसका पॉइंट क्या है? Are you trying to get at something? You know? या तो ये कुछ लॉन्च करने वाला है, so he was maybe trying to build some hype for that. क्योंकि जनरली तुम कोई बात कहते हो तो उस बात का कोई पॉइंट होता है. अभी मैं बोलूँ रात हो रही है तो रात तो हो रही है, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ मी सेइंग दैट कि रात हो रही है, अनलेस आई गो लाइक कि यार रात हो रही है, मुझे सोना है क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और समथिंग लाइक दैट. देयर हैज़ टू बी पॉइंट टू व्हाट यू आर सेइंग. यू डोंट जस्ट से थिंग्स व्हेन आई एम आउट एंड अबाउट. आई डोंट नो, लुक सन इज आउट. इसलिए इट्स लाफ्ड अपॉन जब कोई मिलता है ना, किसी से बात करता है, तो वेदर इज नाइस दीस डेज, दोज काइंड ऑफ स्मॉल टॉक्स, राइट? सो रणवीर, व्हाट वर यू डूइंग हियर? आई डोंट नो, बट व्हाई वुड कुणाल कामरा टेक एन इशू विद दिस? जब टीम मेरे तरफ देख रही थी फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स. अच्छा, okay, sorry. Fuck me. Oh my god, can someone fuck off? What am I, a retard? When the team looked to me for the next steps, I found myself going back to Sant Kabir's Doha. धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, नहीं, धीरे धीरे मना, धीरे नियॉन मैन बता देगा. कबीर के एक दोहा को फॉलो कर रहा था. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए. एक सिंपल रिमाइंडर कि ग्रोथ में वक्त लगता है, सो डज रीबिल्ड. ये ट्वीट. ओके, ठीक है. ओके, देयर यू गो. नाउ वी हैव अ पॉइंट कि क्या कहना चाह रहा था. मैं बहुत स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ. सब टेक्स्ट इज लाइक आई एम अ डिकहेड, आई एम अ रिटार्ड, आई एम अ फक शिट पर्सन. नियॉन मैन का करियर चलाने के लिए लोग लफड़े करते हैं. ट्रू. तो देखकर कुणाल कामरा बिल्कुल भी खुश नहीं था. उन्होंने रिस्पॉन्ड किया बाय सेइंग अथॉरिटीज ने 30+ आर्टिस्ट को समन किया था, इंक्लूडिंग मी, फॉर बीइंग ऑन लेटेंट. पूरे कॉमेडी फ्रेटर्निटी में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था बिकॉज़ ऑफ हाउ स्टूपिड यू आर. शोज वर कैंसल्ड, वेन्यूज पुल्ड आउट, जजमेंट्स मेड. आपके स्टूपिडिटी की वजह से अभी भी कॉमेडियंस का लाइफ डिफिकल्ट है. उस चीज को तो आप नहीं समझ रहे हो. स्टॉप प्रिटेंडिंग टू बी द नाइस गाय यू आर नॉट. टेक द चेक्स, लोअर योर गेज एंड बी वेरी अशेम्ड. इसको मिल करना बंद करो एंड जिस चीज में बेस्ट हो, ब्रॉडकास्टिंग एंड क्लाउड चेजिंग, उसे करो. एनीवेज, नाउ लेट्स Yes, today is the first day I put it on. Actually, इसका नया शो आ रहा होगा, would you rather करके.
नहीं, hold on. Okay, to what Kunal Kamra said, like it is true. At the same time, Kunal Kamra खुद नहीं बोलता कि oh comedians should be able to speak shit. खैर मुझे नहीं पता वो बोलता है या नहीं बोलता, but his entire comedy style is like this, right? I'm gonna say whatever the fuck, and by whatever the fuck I mean like his political alliance या फिर जहाँ पर भी he is politically leaned towards, like I'm gonna talk for that, I'm gonna talk anti fucking BJP rhetoric and shit. कुणाल भाई को कोई शैम्पू से कुछ नहीं होता, मलिक हिंद, भगवान ना करे कभी तुम्हें भी ऐसा गंजापन मिले। मैं तो तमिलनाडु में हूँ। अरे वहाँ कैसे आएगा भाई? समर में लाइट शेड वाले कपड़े पहनते हैं ना। Talk about ध्रुव राठी वर्सेस प्रफुल्ल गर्ग। तो प्रफुल्ल गर्ग ध्रुव राठी के बैन को लेकर अपील की। Yes guys, ध्रुव राठी के लेटेस्ट वीडियो को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रहा है। उसी पर अपना ओपिनियन प्रफुल्ल गर्ग भी दिए। उन्होंने क्या कहा आप लोग खुद सुन लीजिए। Is it a wrong time to say कि मुझे भूख लग रही है? किस बात का लगता है? जर्मनी में बैठा एक एंटी इंडियन, मैं एंटी इंडियन क्यों बोलता समझाऊं, कहता है कि प्रभु श्री राम मास्क क्यों हमारे इधर एसी नाम का चमत्कारी यंत्र है, वो सब ठंडा कर। अरे नहीं यार, दिस इज अ वेरी लाइट थिंग, दिस इज एक्सट्रीमली लाइट, extremely light, and I was riding the motorcycle and it was very nice and cold, right? तुम लोगों में से नॉनवेज कौन कौन खाता है? वेजिटेरियन कौन कौन है या नॉन वेजिटेरियन कौन कौन है? टेल मी। Me, Paul, I'm assuming is a non-vegetarian, okay? खाते थे और कृष्ण जी मांस खाते थे। Every color is light, respect every color, true. Non-veg, human is also a non-vegetarian. Omnivorous is gay, okay, good. कौन बचा? शुभदीप तो टट्टी खा। Okay. Have you guys had galotti kebabs? Like they're really nice. Like अच्छे वाले। जी वेज खाना कौन खाता है? So what we eat, मतलब every once in a while we eat really good galotti kebabs and nihari, नली निहारी। Oh my god, क्या मज़ा आता है। बट अब हमको पता है क्योंकि जो देसी कतई देसी जगहों पे हम खाते हैं ना ये खाना, वहाँ हम जाके खा नहीं पाएंगे क्योंकि गर्मी आती जा रही है और वहाँ देसी जगहों पे कतई क्राउडेड होता है और वहीं खाना बन रहा होता है। इट्स जस्ट रियली गुड। किधर खाए? मेरे यहाँ अच्छे वाले नहीं मिलते। सो देर आर अ कपल ऑफ मुस्लिम एरियाज इन दिल्ली वेयर यू कैन हैव रियली गुड नॉन वेजिटेरियन फूड, मतलब अमेजिंग। बहुत अच्छे जामा मस्जिद पे एग्जैक्टली जामा मस्जिद के बाद बहुत अच्छे मिलते हैं। यप, ओह माय गॉड, इट्स ग्रेट फूड। मुस्लिम व्हाट यू मीन भाई? ओ प्रोनाउंसिएशन नाजी, सारे गे दोनों मदिरा पीते थे, सारी बातें कर लेते। उसके बाद काफी पेजेस वीडियो बनाकर एडिटिंग कर पुराने I call you gay because that's your name, but it sounds like I'm being homophobic when I say साले gay. ग्रंथ वगैरह निकाल कर समझा रहे हैं कि नहीं वो ड्रिंक कैसे बनती थी, वो अलग थी, वो लोग फल फ्रूट्स खाते थे, पूरा सात्विक जीवन जीते थे। क्यों समझा रहे हो उसे? आपको नहीं पता कि उसे बात बताओ? आपका सबका काम सिर्फ एक होना चाहिए था और अभी तक नहीं करा, तो मेरे साथ मिलकर अब कर लो। मोदी जी से एक सवाल पूछो, राम का मंदिर बनवाया ना, बाहर बैठ के एक इंसान राम जी के खिलाफ बोल रहा है, जैन जी को ब्रेन वॉश कर रहा है, आप उसका अकाउंट डाउन नहीं कर पा रहे। अकाउंट छोड़िए, आप वो वीडियो डाउन नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हो। यही इंसान आके बोलेगा कि डेमोक्रेसी खतरे में है भारत की। आप इंडिया के कुछ अकाउंट डाउन कर सकते हैं जो इंडिया के लिए खड़े होते हैं, उनकी 2-3 दिन की नींद हराम कर सकते हैं, बट ऐसे लोग अकाउंट डाउन नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी जीरो सिविक सेंस मूवमेंट को लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। बेसिकली वो थिएटर गए थे मूवी देखने, एंड लास्ट में कुछ बिहेवियर को लेकर वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। आप लोग खुद देख लो। गाइस देखो, नो सिविक सेंस। खड़े हो गए भाई, खड़े होकर देख रहे हैं, ये नहीं बैठ जाए, हमको दिख ही नहीं रहा है, हमको दिख ही नहीं रहा है, खड़े होकर देख रहे हैं यार, लाचा जी कोई सिविक सेंस ही नहीं है। देखना अब कोई पीछे है तुम्हारे बैठा हुआ, तुम भी बैठो भाई, हम देख नहीं पा रहे हैं। खड़े हो, क्या खड़े हो, क्या होगा? पीछे वाले को दिख रहा नहीं, बस या तो चले जाओ या बैठ। एक भाई ठीक है, मतलब are you gonna repeat the same line fucking 10 times? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इमरान खान के बारे में। तो क्या एक्टर इमरान खान धुरंधर मूवी की तरफ थोड़ा सा डिग लिए। बेसिकली रेडिट में उनका आस्क मी एनीथिंग सेशन चल रहा था, तो एक फैन ने उनसे सवाल पूछा था, प्लीज आप भी ये माचो रोल्स में ट्रांजिशन मत करना जो कि अभी ट्रेंड में है, क्या आप एक एलजीबीटीक्यू ड्रामा में स्टार करना चाहोगे? जिस पर इमरान खान बोले, या मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इन प्लेइंग अ हेरी एंग्री मैन कवर्ड इन ब्लड। आई थिंक वो जॉनर को ऑलरेडी बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनीवेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट It's not even Dhurandhar, it's also Animal, right? बताओ इसमें भी मोदी जी की गलती निकालनी किसमें? ये गांधी बीजेपी में कैसे है? हैं? नेक्स्ट वीडियो, वाइट कान मुस्लिम ईट पोक, ट्रू। जब एसी चलाऊ होगा ना, इसलिए इसे गर्मी नहीं लग रही, पंखा बंद था। ह्यूम इज
Okay, you know what, Hume? Bring it on. Bring it on. Start it. Start it. Let's see who finishes it. वायरल महाकुंभ गर्ल। तो गाइस आप लोगों को ये वायरल महाकुंभ गर्ल मोनालिसा तो याद ही होगी। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर के खिलाफ शॉकिंग एलिगेशंस लगाए। शी क्लेम्ड कि सनोज मिश्रा उन्हें फिजिकल असॉल्ट किए थे। शी सेड कि सनोज मिश्रा एक अच्छे इंसान नहीं है, उन्होंने मेरे को 10-12 बार टच किया। मैं अपने फैमिली को जाकर भी इस चीज के बारे में बताई, बट उनके तरफ से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। सिर्फ मुझे पता है कि कितने पेन के थ्रू मुझे जाना पड़ा था। इनजस्टिस हैपेंड टू मी। मेरे फैमिली ने सिंपली मुझे बोल दिया था ये तो तुम्हारी पहली फिल्म है ना, बट क्या पहली फिल्म को लेकर वो मेरा करवा देंगे? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अक्षय कुमार एंड वामिका गब्बी के बारे में। तो अक्षय कुमार रिएक्ट किए टू द एज गैप रोमांसिंग ऑन स्क्रीन। How do we just move on from that? डिबेट। यस काफी सारे मूवीज में आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के बीच में काफी बड़ा एज गैप होता है एंड ऑन स्क्रीन उनके रोमांस सीन्स रहते हैं एंड पीपल फाइंड इट वेरी ऑकवर्ड। वेल भूत बंगला मूवी में भी अक्षय कुमार वामिका गब्बी के साथ स्टार कर रहे हैं इस डिबेट पर। Bhoot Bangla, okay. Akshay Kumar reacts to age gap, okay. वो रिप्लाई देते हुए कहे तो क्या है, हमने पहले देखा नहीं है क्या ये कभी? हॉलीवुड में भी तो ये होता है, समटाइम्स इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। रियल लाइफ में भी तो कितने सारे लोग अपने पार्टनर से शादी करते हैं जो कि उनसे बहुत ज्यादा ओल्डर या फिर यंगर एंड या टॉकिंग। Akshay Kumar ji, the requirement of the script is not ke the actress would seem considerably younger than the actor. That's almost never in the script. That's the reality of the industry. That's how you people and also the audience work. क्योंकि लोगों को भाई नई नई हॉट हॉट यंग यंग इलीगल बंदियाँ देखनी है. Okay, so that's how the world is working. That doesn't necessarily mean it's right. At the same time, you cannot justify it by saying कि a lot of the times it's the ask of the script. Usually it's not the ask of the script. Usually it's the hero and heroine. आदमी होगा औरत होगी. बहुत ही कम मूवीज़ होती हैं जहाँ पर लिटरली बात होती है कि हाँ ये तो एज में मेरे से कितना बड़ा है. एंड व्हेन जब मूवीज़ में ऐसी बात होती है अल्टीमेटली दैट्स व्हाट द होल मूवी इज़ अबाउट, बिकॉज बॉलीवुड में दे कैन नॉट एक्चुअली मैनेज टू मेक अ मूवी मोर देन अबाउट वन थिंग. Make a movie about more than one thing. Just like I couldn't manage to make that sentence without fucking it up. एक्टर जवान नहीं ले सकते तो एक्ट्रेस ले लिए, इतना क्या एक्सप्लेन करना. No, I think there are other things going on there as well. मैं स्टार्ट नहीं करती फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन अब मैं टॉलरेट भी नहीं करता. ओके, ये नया भारत है. ये बोलेगा भी जवाब भी देगा. व्हाट? अच्छा, ओके. हाँ, जहाँ तक वो वाली बात है कि ठीक है एक्टर यंग नहीं ले सकते वो क्या. I think there's a real push for it. I don't think the push is purely from the audience side. I think there's a real push for it from the industry side as well. But that's just me. That's my conspiratorial hat on, right? I don't know that. I'm not an insider. I'm not even an outsider. I'm not any either, right? I am wearing long shorts, by the way. I know it didn't look like it that, okay? But fuck you guys. Oh, ये क्या आ गया? about the भूत बंगला मूवी, तो क्या धुरंधर 2 के सक्सेस की वजह से इसे भी पोस्टपोन कर दिया जा सकता है? वेल रिपोर्टेडली इसका रिलीज डेट अप्रैल 10 तो फिक्स था, बट धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस रैम्पेज को देखते हुए बताया जा रहा है कि इस मूवी के मेकर्स शायद से इसके रिलीज को एक हफ्ते से पोस्टपोन कर सकते हैं. तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यूके 07 राइडर के बारे में. तो क्या यूके 07 राइडर Why are we still talking about him? तो सिर्फ व्यूज के लिए मिल्क किया जा रहा है? इस चीज पर वो रिएक्ट किए. यस, उनके जो क्लोज एसोसिएट्स एंड फ्रेंड्स हैं वो उनके साथ काफी सारे वीडियोस बना रहे हैं. तो यही मिल्किंग ऑफ व्यूज वाली सिचुएशन पर रिप्लाई देते हुए उन्होंने क्या कहा आप लोग खुद सुन लीजिए. सबसे ज्यादा बदनाम योगेश हुआ था फेम खाने के चक्कर में, बट योगेश ने आज तक मेरे साथ एक वीडियो भी नहीं बनाई. मतलब स्टार्टिंग से तक रोज योगेश आता रहा इसके तरफ. छोटे भाई का परिवार थोड़ा था, बट योगेश को बहुत ज्यादा. छोटा भाई अपना योगेश भाई. शुक्रिया योगेश भाई. राम राम भाई, सारे भाई छत्तीस बरादरी नाम जोड़ कर राम राम तक कई भाई सोचा भाई की वीडियो गेयर का फेम नाम लेना भाई. क्या भाई की हेल्प के लिए वीडियो गेयर जा रे क्या भाई सारी मिसाल है भाई. राम राम भाई सारे भाई छत्तीस बरादरी. तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं GTA 6 के बारे में. तो क्या GTA 6 इंडिया में पहले आने वाला है बिफोर द अदर कंट्रीज? वेल रॉकस्टार इंडिया एक रिक्रूटमेंट ड्राइव अनाउंस किया है जहां पर वो हायर कर रहे हैं फुल टाइम इन ऑफिस गेम. Okay. इस सिचुएशन पर फ्लाइंग बीस्ट भी अपना ओपिनियन देते हुए कहा है कि मैं Why do you give? Okay. Famous people, you have to give a fuck. Well, I agree with Kunal. अग्री करता हूं, बट आई थिंक द बिगर कल्प्रिट हियर वाज डिजायर. ऑनेस्टली पूरा कॉमेडी फ्रेटर्निटी उस दिन अपने आप को बचा सकता था एट द एडिट टेबल. समय ने उस एडिट को मल्टीपल टाइम्स देखा होगा एंड देयर वाज नो रश एंड येट ही चोज टू लेट दैट स्टूपिड कमेंट पास. एक स्पिरिचुअल गाय जब ऐसे वल्गर एंड ऑफेंसिव रिमार्क्स पास करेगा इट्स ऑलमोस्ट गारंटी टू ग्रैब अटेंशन. रणवीर ने भी क्लाउड चेस किया था एंड सो डिड समय. बेस्ट विशेस फॉर बोथ इन द फ्यूचर. एनीवेज अब हम लोग बात. What do you want to say? Why do people keep talking when they don't have anything to say? I'm sorry. Can someone please explain to me what was his point? Flying Beast का? पेटेंट कंट्रोवर्सी जिस पर कुणाल कामरा उनकी स्टूपिडिटी को कॉल आउट करते हुए उन्हें स्लैम किए थे. ठीक है, रणवीर ने बोला कि ओ मैं स्पिरिचुअल हूँ, मेरे पूरे दिमाग में कबीर का दोहा था उस टाइम पर भी. एंड कुणाल में लाइक साले तेरे वजह से 30+ लोग की टट्टी निकली पड़ी है. इस सिचुएशन पर फ्लाइंग And this guy Gaurav, again his name is Gaurav, so there's something that
comes in and says, बीच भी अपना ओपिनियन देते हुए कहे कि मैं कुणाल से अग्री करता हूं बट आई थिंक द बिगर कल्प्रिट हियर वाज डिजायर ऑनेस्टली पूरा कॉमेडी फ्रेटर्निटी उस दिन अपने आप को बचा सकता था एट द एडिट टेबल समय ने उस एडिट को मल्टीपल टाइम्स देखा होगा एंड देयर वाज नो रश एंड येट ही चोज टू लेट दैट स्टूपिड कमेंट पास एक स्पिरिचुअल गाय जब ऐसे वल्गर एंड ऑफेंसिव रिमार्क्स पास करेगा इट्स ऑलमोस्ट गारंटीड टू ग्रैब तो अटेंशन मुझे ये भी समझ आता है कि तुम हग रहे हो, तुमने जान के अटेंशन के लिए ये सारी चीजें करी हैं, रणवीर ने भी तुम लोगों ने गंदी चीज करी है, चीज किया था एंड सो डिड समय बेस्ट विशेस फॉर बोथ इन द and then you're like best wishes for both. Like पहली बार इसने कोई ढंग की बात बोली. No, I don't think he has a point. I don't think he has a point. फ्यूचर एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक वायरल रोड रेज कलेश के बारे में. तो गाइस जयपुर से एक वुमेन का वायरल जा रहा है जहां पर एक माइनर कोलिजन को लेकर वो दूसरे पर्सन के मोटरसाइकिल को बहुत बुरी तरीके से डैमेज पहुंचा. इसने डिवोर्स वाला क्लाउड चेजिंग भी तो की थी ना. आई एम नॉट श्योर वो क्लाउड चेजिंग थी या नहीं थी. आई एक्चुअली डिडंट थिंक देन इट वाज क्लाउड चेजिंग. सो या आई डोंट नो. उस टाइम पर आई रिमेंबर थिंकिंग दैट इट्स probably not cloud chasing. They're probably going through something, but who knows. ये रिपोर्टेडली हेवी ट्रैफिक की वजह से उन दोनों का टू व्हीलर्स थोड़ा सा कोलाइड कर गया था जिसके बाद एक हीटेड आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ एंड ये सिचुएशन बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गया. वो वुमेन ने क्या हरकत गौरव तनेजा एसजीपीटी का फ्री वर्जन वाला कहीं भी बेफालतू में आ जाता है और कोई सेंस नहीं बनता. एग्जैक्टली. You just come out and say the obvious and you're like, oh, best of luck. What? बोले जो कोयल बांगो क्या. किया आप क्लिप देख लो देन मैं आप लोगों को फर्दर अपडेट बताऊंगा. इससे क्या होगा मुझे बता दो. अब आगे मेरी बात सुनो. आपके 1700 रुपए का नुकसान के बराबर हो चुका है. अब छोड़ दो गाड़ी. नहीं तो छोड़ दो. हो गया. गाड़ी तोड़ दी आपने. गाड़ी तोड़ दी आपने. ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही. देखिए आप पुलिस वाले खड़े हुए हैं. सर गाड़ी तोड़ दी मेरी. मजा आ रहा है ना तोड़ने में. मेरी गाड़ी नुकसान नहीं हुआ जितने में गाड़ी तोड़ दी मेरी. ये चलूंगा मैं पूरा गाड़ी तोड़ने का. बहुत हो गया. कुछ भी नहीं कर सकते. पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा. इतनी बड़ी हो. अब जैसा कि वो वीडियो में बिहेव इसलिए कभी कभार ऐसा लगता है कि बचपन में तो यार थोड़ा लोगों को ना पिटना जरूरी है. माँ बाप से नहीं लेकिन दुनियादारी से. इधर उधर छोटी मोटी इधर उधर गैंग की आपस में लड़ाई हो जाती है, स्कूल में लड़ाई हो जाती है, कहीं पिट लेते हैं, तो थोड़ा बहुत पिटना तो ज़रूरी है हर इंसान का बचपन में. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार. जिन लोगों को ये रियलिटी ऑफ वायलेंस नहीं पता होती, जिन लोगों को ऐसे नहीं पता होता कि किस चीज़ के किस टाइप के कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं. लाइक इफ इमेजिन दैट गाय बीइंग अ साइकोपैथ, दैट गाय could have just fucking knocked her out right there, right? If he was a psychopath. It is incomprehensible for most people कि छोटी छोटी situations कितनी ज़्यादा वर्सन हो सकती हैं. Like she is doing the thing to his bike और वो बंदा अचानक से पागल हो रहा है. He just punches her across the face. She gets knocked out. She falls down, hits the back of her head. Done. Either you're dead or you're completely paralyzed or something else. You're brain dead or whatever the fuck. You're just done. That's not a simple theoretical. That's not a simple hypothetical. This shit happens all the fucking time. People just don't fucking realize that. And नरेश भाई आपके साथ आपकी बाइक के साथ करती तो क्या. I think I just नहीं, I'd probably act the same way. I'm not a violent guy. I'm not, but hold on. I'm not gonna let her do it. Right? I'm gonna stop her, and then we'll wrestle a bit on the street, I guess. But I'm not gonna let her do it because once you're fucking with the vehicle too much, then even once you get it fixed, is it really that fixed? So yeah. करी थी लोग उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे. जयपुर पुलिस को लोग टैग करना स्टार्ट कर दिया. उनकी तरफ से भी रिस्पांस आया कि कंसर्न ऑफिसर तक बात पहुंच गया है एंड उसके बाद ये मैटर से रिलेटेड अपडेट आया कि ये बात पुलिस स्टेशन तक पहुंचा था. दोनों ही पार्टीज को काउंसिल किया गया एंड ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि ये सिचुएशन रिजॉल्व हो गया उन दोनों के बीच में एंड कोई भी फॉर्मल केस या फिर लीगल एक्शन वो वुमेन के खिलाफ रजिस्टर नहीं किया गया. तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं धुरंधर 2 के बारे में. तो धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड. So like imagine you knocking her out in Deepak Street photo. भाई लेकिन कोई केस क्यों नहीं हुआ? What the fuck? Like how much money did she have to pay? किए जा रहे हैं बट वो पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाए. यस कल ये मूवी से रिलेटेड न्यूज़ आया कि 7 दिन के अंदर इसने 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन क्रॉस कर लिया. बट गेस व्हाट, पुष्पा 2 का जो 7 डे वर्ल्ड वाइड टोटल था उसको वो क्रॉस नहीं कर पाया. जस्ट 5 to 10 करोड़ का गैप रह गया था. लेकिन बात रही सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तो धुरंधर 2 के आसपास भी कोई नहीं है. नेट कलेक्शंस देख लिया जाए तो एक हफ्ते के अंदर वो 500 करोड़ क्रॉस किए एंड बाकी हिंदी मूवीज तो आज तक सेटलमेंट हो गया ना. स्टिल हाउ मच मनी. आई वांट जेल टाइम. एक रात तो लॉकअप में चाहिए मेरे को. सॉरी
800 करोड़ का मार्क भी ब्रीच नहीं किया। बट यार व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट धुरंधर 2 तो फाइनली आदित्य धर इस मूवी के कंप्लेंट को लेकर अपना रिप्लाई दिया। ये सिख कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का इनके ऊपर एलिगेशंस लगा था कि अपेरेंटली एक पर्टिकुलर सीन में रणवीर सिंह के कैरेक्टर सिगरेट स्मोक कर रहे थे जो कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। वेल गेस व्हाट, अब आदित्य धर ने एक स्टेटमेंट इशू करके बोला दैट सीन वाज एआई मैनिपुलेटेड। उन्होंने कहा कि हमारे प्रमोशनल मटेरियल को यूज करके एआई के थ्रू मिसलीड किया जा रहा है, एक फैब्रिकेटेड इमेज को फैलाया जा रहा है जहां पर जसकीरत के कैरेक्टर को डिपिक्ट किया जा एक रात जेल में और 3 मंथ हॉस्पिटल में रहा था while smoking a cigarette wearing a turban। ये बिल्कुल फेक है एंड दैट सीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मूवी। हम सिख कम्युनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं एंड हम लोग ने फुल डिग्निटी एंड रिस्पांसिबिलिटी के साथ ये मूवी को बनाया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो क्या इंडिया में I so much hate for that movie, dude. Like I can understand not liking the movie. I can understand feeling like it's a piece of propaganda. लेकिन अगर तुम ऐसी चीजें भी कर रहे हो, if you're doing this AI shit, then you are being just as bad. यूट्यूबर्स एंड एक्टर्स को गॉड स्टेटस दे दिया गया बाय मेनी पीपल। आशीष चंचलानी इस पर रिएक्ट किए। बेसिकली वो अपने स्टोरी में एक फैन मीटअप का क्लिप शेयर किया था जहां पर वो मॉल गए थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो क्रेजी हाइप था यार उनके लिए, इतने सारे लोग देखने आए थे। ऑब्वियसली आशीष काफी ज्यादा खुश थे, वो अपनी स्टोरी में इसको शेयर करके लिखे नेक्स्ट कहां। बट उनके एक फैन की तरफ से थोड़ा सा डिफरेंट मैसेज आया। भाई नो हिट, मैं जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या इंडियंस यहां पर एक्टर्स एंड यूट्यूबर्स को गॉड स्टेटस दे दिया क्योंकि बाहर के कंट्रीज में सेलिब्रिटीज फ्रीली रोम करते हैं एंड फैंस उनसे नॉर्मली Do you know what God status mean, my guy? एंगेज करते हैं। वेल आशीष उनको रिस्पॉन्ड करते हुए कहे कि आई डोंट नो अबाउट द अदर फैंस, मेरे फैंस तो मुझको कभी भी एज अ गॉड ट्रीट नहीं किया। वो हमेशा मेरे को यंग ब्रदर एंड सिस्टर वाला Okay, boring. I'm fucking off, dude. I'm so done with the world. It is so boring. Everything is just so retarded. Everyone is an idiot. I'm just fucking done. Nothing is interesting anymore. Right? Houston Jones, come on. Okay. Houston, right? Shirt may what is on my shirt? I don't know. What is on this thing? क्या ये? This is a bread. This right here is a bread. This is a coffee or tea or something. I don't know. शर्ट में कॉफी कब बना है? Internet personality. What? क्या दिखा रहा है तू? कुछ अजीब सी चीज लग रही है पर Okay, I'm not watching this shit, okay? No, yeah, this is like as bad as YouTube gets for me. Thank you. No, I'm not gonna react on this fucking shit. This is as bad as YouTube gets. There's nothing worse on YouTube than this shit. Crazy though. Yeah, sure. Not only do I hate this kind of content, I even hate this kind of thumbnails. Like, you know, like this Mr. Beast-esque kind of thumbnail. भाई देख रहा हूँ मैं. I tried removing my fingerprint for science. What do you mean for science? नहीं भाई. Like, I hate thumbnails like these. I hate content like this. It's just horrible. Like, it's Mr. Beast, but somehow stupider. And I think जब मैं like 5-7 साल पहले I would have been very impressed. Oh boy, क्या कर रहा है? Now I'm just too old for this shit, dude. To enjoy this shit. Okay, this seems more like a simpler thing. So once. Oh no, he's going to bleeding. Fire trucks. Since you said so. To tackle blazing fires with incredible water pressure. But have you ever wondered how powerful they are? Could a blast from one of these fire trucks cause serious injury or worse? Today, we're diving right into आज ही देखा मैंने इसको first time like क्यों करने that देखा. question by Okay. aiming a fire hose directly at me. To do this, I teamed up with Scott from Kentucky Ballistics, the man with a fire truck, and the only person who I knew who could legally spray me with a fire hose. How's it going, Scott? Doing pretty good. Standing here with my Master Blaster, so I named it. Because that's not what it's called. No, I really don't know the technical term for it because I was a state trooper. You know, I was a firefighter on the weekend. So, Master Blaster, and I'm going to blast you. I'm so excited. Let's blast me. So, Scott, I've been wanting to do this exact idea for a long time, but as it turns out, local firefighting agencies have some weird legal liability issues with this. Insurance, always running the fun. I know. You just so happen to buy a fire truck, and real quickly, can you give us a rundown on this bad boy? Yeah, I don't know why I bought it. I I'm glad I couldn't did. care about As this. much as we can, and to see what we can do to our real human. Yes, and I am. Starter pack with an epic champion Toger from the Orc faction. And you'll get another starter pack तेरे को तो रंगे लड़के अच्छे लगेंगे ही. Guess. Yep. after reaching level 15, which includes an epic Knight Errant True. from the Bannerlords faction. You can come find me in-game under the name Houston Jones and join my clan, the Data Collectors. Thank you to Raid for sponsoring and help making this video possible. Okie dokie, we're at about 50. I'm going to spray it this way first just to like figure out if it's. See, that's no good. I'm going to try. You ready? Yeah. Cut it up! Oh my gosh, so how was that? I am thinking right now, and I'm like, not only do I feel like I dove into a pool, it pushed me back a little. You were moving. Yeah, I had a solid stance. Yeah, you were moving. That's a lot of water getting shut. I'd say about right there. Get low. You got to get low.
Ready? Here we go. Okay, here we go. Oh, come on, you do another. Oh, here we go. Okay. Yeah. पावर हाउस तो बहाना है, असली मकसद तो कपड़े उतारना है. True. Untitled John Wick game announced. Trailer PS5 games. That seems interesting. Watch party होगी Wednesday. पार्थ जी बताएंगे. और इसने पैसे देके ये पानी वेस्ट किया इंडिया में किसी प्रोटेस्ट में चले. नहीं, I can imagine Varun Pruthi coming here and making a video. ये देखो पानी वेस्ट कर रहे हैं. Okay, so this is actual game, not actual gameplay. Fuck. Then there's no point. How can you make a fun John Wick game? क्योंकि शूटिंग इतनी ज़्यादा overdone है इन सब गेम्स में, थर्ड पर्सन शूटिंग एंड इवन फर्स्ट पर्सन शूटिंग. सो A man with your skill set must be able to move unconstrained, unrestricted. जापानीज एस्क वाइब दे रही है. He must be versatile, capable, Resident Evil. adaptable. To me, this feels more Sifu. Plus, ये क्या है? There's this game they're working on apparently. It feels like the combat might be similar to Sifu. भाई स्ट्रीम पर साइबरपंक मैं तो एनी डे यार, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स. साइबरपंक आई एम विलिंग टू डू दैट एनी डे. तुम देखने वाले बनो और टाइम से आने वाले बनो. मैं तो आ रहा हूँ. He must be grounded, stable, constant. और इस बार स्ट्रीम पे आई वांट टू डू अ फीमेल वर्जन ऑफ वी का गेम प्ले. लाइक आई हैव डन मेल एट लीस्ट ट्वाइस, सो दिस टाइम आई वांट टू डू द फीमेल वन, राइट? Damn, game looks clean. This is not actual gameplay, so. It would be really interesting to see. Because I don't think I've played any games जिंदगी में which handles this well. कि armed and unarmed combat का mixture आपस में. If they can do that, it would be groundbreaking. जहाँ तक मुझे लगता है. Like imagine Sifu level का combat and any good gunplay. Like gunplay, you don't have to make it that good. Plus environmental destruction. Fucking hell, dude. I believe you are ready, sir. It would be amazing. बताओ करना है साइबरपंक? दूसरा ऑप्शन नहीं सोचते. Yeah. Wait, Keanu is actually in the fucking game? अच्छा, this is probably real gameplay. Okay. Captured on PS5, yes. Oh, finishers में तो है, okay. बहुत janky लग रहा है. Real gameplay though. Wishlist now. Okay. No comments. All right. नहीं, रियल में मज़ा नहीं आएगा, राइट? इट डजंट सीम गुड इन रियलिटी. Let me show you guys something. Let me show you. तो मैं आज जा रहा था. This is the fucking limits of AI, by the way. तो मैं जा रहा था आज कहीं बाइक पे, राइट, टू मीट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स. एंड सो मेरे फ़ोन आया एंड आई डोंट यूज़ एनी
sort of helmet headset or anything like that. तो मैं रुका ही था फ़ोन उठाने के लिए. तो I just also clicked a photo, right? Can you guys see it? तो मैंने सोचा घर आने के बाद मैंने सोचा I'll get this photo, I'll put it on ChatGPT and I'll ask it to clean it. Like वो गंदा वंदा हो रखा है घास से. तो मैंने बोला कि wait, so this is the photo, right? मैंने बोला कि ये गंदा वंदा हो रखा है, clean it and make it look nicer. Look what ChatGPT did. Like damn. Right? And फिर I went a little overboard. मैंने कहा इसमें ना फिर वॉल्यूमेट्रिक हेज भी डाल दे. ओरिजिनल ज़्यादा अच्छी है. आकाश यार ओरिजिनल में द इशू विद द ओरिजिनल इज कि द कूड़ा जो पड़ा हुआ है साथ में, दैट इज़ द इशू. अदरवाइज दैट वाज एब्सोल्युटली फाइन. इनफैक्ट उससे थोड़ी देर पहले ही आई फाउंड अ मच बेटर एरिया टू क्लिक अ फोटो, बट मैंने सोचा क्या साइड में रोकूं. बट एंड आई डिडंट हैव माई कैमरा, सो आई जस्ट डिड इट विद माई चाइनीज़ फ़ोन. बिकॉज जो वहाँ पर था फोटो अपॉर्चुनिटी, दैट वाज लाइक कि मैं गुड़गांव की साइड से जा रहा था, तो यू नो दिस पहाड़ी एंड पहाड़ी के वहाँ इट्स लाइक अ लॉट ऑफ डस्ट, और उसके पीछे you can see all these गुड़गांव के skyscrapers like proper buildings. So I think that would have been a cool photo. But मैंने कहा कहाँ रुकूँ, छोड़ो. नीलेश अगर आप रॉ पिक्चर अपलोड नीलेश अगर आप रॉ पिक्चर यार जो मैं इंस्टाग्राम पे करता हूँ मोस्ट ऑफ देम आर रॉ. जो ब्लैक एंड वाइट करता हूँ ना मैं, दे आर शॉट लाइक दैट. सो आई एम शूटिंग लाइक दैट इन कैमरा. कभी कभार थोड़ा विनेट डाल देता हूँ या फिर ये सब, बट अदरवाइज मोस्टली दे आर रॉ ही. And by the way, raw का मतलब obviously ये नहीं होता. Like if you are asking for technical raw, that's a different thing. When I say raw, it's like this is how it's been captured on camera, and this is how it was looking to me when I captured it, and this is how I'm uploading it. Most of the times, not all the time, of course, right? Da 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 da. So this photo I uploaded, right? Like this is exactly straight out of the camera. Like there's no editing done here. Yeah, nothing at all. Real raw. अच्छा, real raw. नहीं, I don't find those colors fascinating. Like I find black and white very interesting. Just look at this. It's just a fucking flat tire, but it looks really interesting because of the black and white. और the real reason I go for black and white is कि हमारे यहाँ पर ना there's not a lot of color consistency. इंडिया की diversity तुम्हें हर जगह दिखती है. तुम चांदनी चौक जाओ, तुम किसी भी crowded जगह पे जाओ, तुम्हें लोगों के normal जो कपड़े हैं, जो तुम्हें इतने ज़्यादा अलग अलग कलर्स में दिखेंगे, तुम्हें जो दुकानें हैं अलग अलग कलर्स में दिखेंगी, वो सारी. सो there's a lot of chaos. So you have to really work around that unless you are exactly trying to show that kind of chaos in relation to something. You have to really work around that if you want something more aesthetic aspect mein. So that's why I just go black and white usually, because then I'm focusing on the frames, I'm focusing on the juxtaposition of the elements of the photo. वो आपस में interact करके what story are they telling. Chilling scares, what you mean? I meant real raw to edit on Gemini. No, never. लाइक अभी ये भी मैंने खाली वो था, इस बाइक वाली फ़ोटो में भी मुझे ये था कि चिलिंग से ओके कि वो जो मिट्टी है वो साफ़ हो जाए. सॉरी, मिट्टी नहीं, कूड़ा. भाई इतना ज़्यादा मुझे, तुम देख रहे हो, इतना ज़्यादा मोटरसाइकिल कंटेंट आ रहा है मुझे. कुछ भी क्या ये मार्वल मूवीज मोटरसाइकिल सीन कॉम्पिटिशन, लाइक इमेजिन दिस, लाइक व्हाट इज दिस. ओके, दिस इज रियली कूल साउंड, बट व्हाट मूवी इज दिस. ट्रैम ट्रैकर लॉन्च कर रही है. आई थिंक ट्रैम ट्रैकर 400 इज अबाउट टू लॉन्च हियर. इट और मे बी इट जस्ट डिड. दे आर नॉट टेकिंग ऑर्डर्स बट इट डेड. ये कौन सी मार वाली भी है, ये बहुत पुरानी वाली होगी, अभी देखता हूँ. तो ये मेरे ख्याल से 350 वेरिएंट ही आएगा यहाँ पर, बट इट विल बी कॉल्ड द ट्रैकर. ट्रैकर 400 इज एन अपकमिंग फ्लैट ट्रैक इंस्पायर्ड रोडस्टर एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन April 26. प्राइस अराउंड 2.25 to 2.4. ओके, सस्ती हो गई सारी ट्रैम्स, दैट्स कूल.
based on 398cc TR series engine. It delivers a punchier. Oh no, okay, it might be a little less, I guess, maybe. But yeah, it looks cool. मतलब I just feel like कितनी सारी निकालेंगे बाइक सब इसी बेस पे. They are reducing the engine size. They have to go 350, right? They cannot make it 400 unless then they'll have to make it much more expensive. RE वगैरह ने तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी अपने जो 350 से ऊपर के इंजन से उनका प्राइस बढ़ा दिया, right? Like even before they had to, I think. But they're very established and they're trying to get established. Not to give them any props, these guys. Like, come on. But this bike looks cool, right? I think it's a very different. टाइम सस्ते वेरिएंट्स में क्यों घुस रहा है. आई थिंक 400 वॉज द चीपेस्ट दे केम आउट विद. और ये जो स्क्रैम्बलर 400 वगैरह हैं, दीज आर डूइंग रियली वेल बाहर. सो क्योंकि दीज आर कंसिडर्ड स्टार्टर बाइक्स बाहर की कंट्रीज में, राइट? सो दीज आर डूइंग रियली वेल. अपनी क्लास में दे आर लाइक बीइंग द बेस्ट सोल्ड एंड स्टफ. तो आई थिंक दे वर प्लानिंग टू गो एज लो एज 400. ठीक है, उसके बाद द न्यू टैक्स रिविजन्स. तो नाउ अब 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिल्स पे देर विल बी 18% की जगह 14% टैक्स. सो देन दे हैड टू इंक्रीज द प्राइस, बट ट्रायम्फ डिडंट इंक्रीज द प्राइस. दे जस्ट केप्ट इट द सेम बिकॉज दे हैव टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन इंडिया. बाकी की कंपनीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, RE वगैरह. सो आई थिंक नाउ दे आर गोइंग डाउन टू 350 बिकॉज they can't help it. Either they make their bikes more expensive or they go down to 350. They're choosing that route. But I don't think they should release anything under 350 ever. Anything. They should definitely not get into the 200, 250, 150. Just like KTM went into those areas. I don't think they should. Candy 6 fuck you, man. Fuck you. मेरे सामने सारी वो पड़ी हैं खाली डब्बे. I know. Where's Outlast Trials? We played it. Chiral Net. Were you there जब हमने खेली थी वो game? But this bike looks really cool to me. Triumph 50cc scooter. Scooter is a different thing. But I didn't know they have that. Oh, I like that Kawasaki ki 180cc or what? That looks really cool. Kawasaki 180 something. 175. This looks really cool. अच्छा अभी देखता हूँ sorry. But this looks really cool. But मैंने सुना it's not good, the bike. But भाई देखने में बड़ी फन सी लग रही है. Like a nice little RX 100 reminder. Honda CB जैसी लग रही, राइट? भाई जब मैं छोटा था, द बाइक्स आई लर्नड ऑन वाज, एक तो हमारे पास पल्सर थी 150 पुरानी वाली, एंड एक थी माय फ्रेंड विवेक, राइट, दक्षा भाई, उसके पास RX 100. लाइक दीज वर द बाइक्स. बाइक्स ही मेरी खूब. अच्छा हाँ, कौन सा बोला था, कौन सा स्केयर्स. Why did Hume like the original photo? कहाँ गया डयम रोया से याद आया, चिलिंग स्केयर्स. अच्छा तो लिखा भी है. There lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong and he's out. 6 most disturbing moments caught. Come on. Achha, is Hume here? Did she leave? If she did, I think we can watch it. Veerdas and Samdesh just dropped an interview. For some reason I don't care at all. Wow, that's weird. Usually I do when Samdesh drops something. उससे पहले ही देखते हैं थोड़ा सा, फिर देखूँगा. अरे वैसे वाले डिस्टर्बिंग नहीं है, बस रिकॉर्ड जाए. ओके
Let's see. On the 30th of June 2025, Veerdas बोल दिया ना. a reporter named Lineal Du Franzau went live. I don't. Does anyone find Veerdas? Okay, hold on. Veerdas. Does anyone find stand-up funny nowadays? From the Miriam River in Brazil to cover a tragic incident that happened there just a day earlier. In the early hours of June 2020, a group of teenagers decided to go for a swim in the river. Unfortunately, they underestimated its depth, resulting in the disappearance of 13-year-old Raisa Fernandez. Seconds after entering the water. Are they releasing a 351? I'm not aware. It might be. Not like I'm going to be aware of all these fucking things. Upcoming retro classic motorcycle. Okay, so it's an expected one. But I think this will be very difficult. जैसे Honda के साथ दिक्कत होती है ना. And this looks good though. But I'm a fan of Ram's design, so मेरा तो वैसे भी perspective skewed है. Doesn't make difference. Funny तो नहीं लो. Fuck off. Yeah, because अभी भी मेरी feed में नाम आता है, so I find stand-up funny nowadays. I think most stand-up is like really bad. I'm sorry guys. Most of it is really bad. बड़ी फोटो भी नहीं है इनके पास. Okay. Water. Her friends watched her dip beneath the surface, and that was the last time anyone saw her alive. Will say like hot cake. Divers looked for her underwater, while rescuers scoured the riverbank, hoping she might have washed ashore somewhere. But even after hours of searching, Raisa was nowhere to be found. Lineal Du intended to use this broadcast. Because I think people are just too into RE ऐसे types की bikes में. Like it's wild to me that Honda doesn't get the props it deserves, right? I think that Highness और ये सारी bikes are good. मैंने सुना है like they really have a cult following, but not mainstream at all. At the same time, you cannot really buy Honda bikes at general Honda stores. You have to go to whatever their fucking bigger store is. Is an opportunity to educate viewers on the dangers of river currents and general river safety, not knowing that he was about to solve the mystery of Reese's disappearance on live TV. Oh, he took off his shit. shoes and started slowly walking into the river while talking about the sudden increase in depth and how dangerous it can be for inexperienced swimmers. Quanto mais você desce, mais fundo fica. Ó, aqui, ó. Até que aqui é de boa, mas... Well, it's actually pretty manageable, right? Só que é uma descida. Aqui onde ela se afogou, gente, é uma descida. Pra você ver aqui, ó. Onde o tanto que eu passei aqui, daqui dá mais ou menos uns 2,5 metros. Ó, e quanto mais você anda, ó a diferença aqui já onde eu estou agora, ó. Então, pessoal, e ainda tem a correnteza. Aqui já, olha, ó, um passinho pra frente, a água já tá praticamente me cobrindo. Então o risco aqui é muito grande, é muito grande. However, nothing could have prepared him for what he was about to encounter just seconds later. Ó a fundura aqui, ó. Eu achei um negócio aqui no fundo da água. Não, era mole. Tá com ela não. While trying to demonstrate the river's deceptive drop-off, Lineal Du accidentally stepped on something lying on the riverbed. It was too soft and organic feeling to be a rock or a submerged log, which caught him off guard. The murky water made it impossible to see beneath the surface. But Lineal Du was starting to realize what it could be, leaving him too disturbed to go back and investigate further. He got out of the water and contacted authorities immediately. And it wasn't long before divers recovered the remains of Raisa from that exact spot. Later, autopsy report confirmed that there was no foul play involved. What happened to her was nothing more than a tragic accident. So she just stayed there? September 25, 2025, the CBS 6 station in Albany, New York received a strange email with a 2-page document. It contained a nearly incomprehensible rant featuring Arnold Schwarzenegger, archaic centuries-old laws, and a proposal to create a board of trustees with prosecutorial immunity. However, the most important aspect of this document wasn't its content. Instead, the reason it stood out among the hundreds of emails the channel received every day was its author, 53-year-old Lawrence Krauss, who also included a selfie alongside the document. You see, Lawrence was currently under investigation for ending the lives of his own parents and getting away with it for over 8 years. It happened in August 2017. His 86-year-old father and 83-year-old mother were living out their retirement in their home in Crestwood Court in Albany, New York. And suddenly, they were gone without a trace. None of the neighbors saw them leaving or heard anything about where they were going. Their house was also left abandoned, with Lawrence only visiting occasionally to collect mail, mow the lawn, and clear the snow. When asked about his parents, he claimed that they had moved back to Germany and won't be coming back. The neighbors had no reason to distrust Lawrence, so no one questioned their absence, and life went on as usual. A distant relative even requested a welfare check in 2020, but the neighbors repeated the same explanation Lawrence had given, ending the officer's questioning without any further suspicion. It wasn't until mid-2025 that the Albany police became aware of something shady going on with the Krause family. Someone had been collecting Lawrence's parents' social security payments, even though the two hadn't been seen in years. This resulted in the police launching a formal investigation, and after months, finally executing a search warrant at the Krause home on September 23rd. Over the next 48 hours, detectives collected thousands of financial documents and other evidence. More importantly, they discovered the remains of Lawrence's parents buried in the backyard. Lawrence likely knew that he was the prime suspect in this case, but instead of turning himself in or trying to run away, he made the unusual decision of sending this document to the local news network alongside his contact information. Israel, Zionism, what the fuck, dude? One of the directors at CBS 6 was familiar with the Krause case and immediately jumped at the opportunity to interview Lawrence. After giving him a call, Lawrence claimed that he was willing to do a live interview with the channel only if they published his document on the internet for everyone to see. The network agreed, and less than an hour later, Lawrence was sitting with a CBS 6 reporter for a live interview. Lawrence was a bit hesitant at first, but after some pressure, he cracked and confessed to everything. I want to hear from you. Yeah. What did you do to your parents? I buried them in their property. You buried them in the backyard of that house in Albany. Right. When it actually happened, when your parents died, did they know what was happening to them? Oh, yeah. And they knew it was at your hand? Well, yes, no one else did. Right. So they realized what you were doing to them as it happened. Yes. They knew that this was it for them. They were perishing at your hand. Yes. And it was so quick. How did you do it?
Yeah, I can't talk about that. Well, you just told us that Right. it was at your hand. Right. Were there drugs involved? No, Was there no. a suffocation? Was there? You suffocated them. You suffocated your parents. What made this confession so disturbing, however, was the way Lorenz tried to portray it as something righteous. His argument essentially boiled down to, my parents were suffering from old age, so I did them a favor. Even though the neighbors described the couple as elderly, they were by no means sick or bedridden. They had normal routines where they tended to their garden, shared mint leaves with neighbors' kids, and listened to Polish music every day. Their lives weren't nearly as miserable as Lorenz tried to portray during this interview. Now, it's unclear if he's severely mentally ill and genuinely believed It's a wild, it's a wild sentence to say after everything is just said, and to go out and say they used to listen to Polish music every day. everything he was saying, or if this interview was his way of trying to paint himself as the concerned son to earn the public's favor before his inevitable arrest. In either case, he had no way of escaping the consequences of his heartless actions. He was arrested immediately after walking out of the network's building and is currently awaiting trial for the death of his parents. On the night of October 28, 2023. चलो fuck off यार, मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. And plus, hey, क्या हाल है? Dude, long time no see. How are you? This is Blade. This is Wolverine. Oh shit. Fast and Furious. Feed. Fuck off. Stupid fucking feed. I gotta fuck off, guys. I gotta fuck off. I have a couple of things coming up. Okay. I have a couple of things coming up, and let's see. I'm gonna talk about them when it's the right time, and not to say like, oh, here's something for you. No, nothing like that. It's just that I'm working on some things, and I'll talk about them more. Papi, 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 ooh la 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 la, papi, papi, papi. I don't know what that is. I know. I'm kind of down. कुछ दिनों से. Energy wise, सब बता दोगे, सब बता दूँगा. केला वगैरह के बारे में भी, केला वगैरह के बारे में भी. क्या हाल है सिद्धू? स्ट्रीम का नाम है पपी. I know that. With time, in due time. And also, like, वो तो serious shit है. There's also like just shit I'm doing on my, on my spare time. So, I think I'm doing some interesting things. At least I find them interesting, and that's why I'm doing them. That's kind of the story of my life. Papi is daddy in Mexican. I guess, I don't know, Mexican में कौन सी language बोलते हैं? Mexicans. I have no idea. They would speak. Spanish? क्या भाई, 1 साल से ही थंबनेल चेंज कब करोगे? जब तू नया बना के देगा, जब तू नया एडिट करके देगा अच्छा वाला. कल देगा तो पता कल से चेंज है थंबनेल. Lish, what do you do? I don't do anything, dude. I think I've already told you guys. My go-to when someone asks me what do you do is not much. I think that's good. I like that. क्या सर्च करना था मुझे? Yes, Mexicans do speak Spanish. See, I was right about that. Biatch. General knowledge, bitch. That's how we do it. That's how... Fuck you, dude. That's how we fucking do it. We know everything, dude. Nothing much की wait कर रहा था मैं. Not much. Not nothing much. Not much. Yeah, so I'm Papi. Alright. भाई वैसे कहाँ से हो आप genuinely? Same place you are from, dude. We're all from the same place. We all come from the same source, the same eternal source of life. That's why death is not real. That's why you are immortal, just like I am immortal, because we are all the reflections of that single source which is ever living, ever present, which is outside the bounds of space-time, which works, which breathes life. अबे सीधा बोल दे.
Oh. First rub of clarity. Okay, that's what I do when I'm streaming. You guys cannot see under the table. I'm usually fapping. So तुमने देखा नहीं कई बार मैं stream करते करते okay, I shouldn't tell you everything, right? But yeah, usually that's what I'm doing. Boo idabad. What? अच्छा. Boo idabad. वो चला ड्रॉ इतने डिटेल्स. Yep. Why YouTube तेरी बहन मेरी भी बहन है, लेकिन मुझे ये बता भाई, why Gracie Adams? I don't know who the fuck she is. I have never heard a song of Gracie Adams knowing कि अच्छा ये Gracie Adams का गाना है. One day I got suggested stream पे ही one of her videos of performing live, and as a joke I went like, who is this beautiful, I mean talented lady, right? And I clicked on the video, और उसी time पर I just clicked back. Since then, why do I keep getting this suggestion daily? Why? Not to say I mind it, but I've never clicked on it. Never. अरे कोलकाता से है ये भाई. ग्रेसी एडम्स है कहाँ से भाई? देखिए नाउ यू नो हर्ष. 5 बार ये ब्यूटीफुल और टैलेंटेड वाले जोक मार चुके हो, बट मैंने क्लिक सिर्फ एक बार करा है. राइट? यू नो दैट राइट? गे This cow. Oh fuck, आज तो मैंने Discord देखा ही नहीं guys. Sorry, my bad. But she is very pretty. I mean, come on, fuck you guys. She is very pretty, right? How dare you? How dare you talk shit about her? Fuck you guys. I'll never hear a single word in vain of Gracie Adams, okay? मैं बहुत सारी रील भेज रखी है, तुमने तो शुभदीप ने सेल्फी भेज रखी है. Who is almost philosophical 23? Is this gay? अच्छा, आपके वो स्टैंड अप वाले क्वेश्चन पे स्टैंड अप का नहीं पता, बट तन्मय इज गुड एज फक. ऑलराइट. आई हैव लाइक्ड इट. देखिए मैंने, समझ गया मैं कौन सी है ये. इट इज़ भाई बहुत मुश्किल है ये समझना, मतलब ये एक्सेप्ट करना कि ये सीरियस फिल्म बना रहे थे अपनी तरफ से. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट. उनका एक भी आतंकी और उनका एक भी कैंप नहीं बचना चाहिए, वो भी उनके घर में घुसकर. ओके, परांठा कैसा लगता पे है? एक्सीलेंट. This, wait, hold on. Is this real? Eric saying, is this real? Is this real? There's no way, right? This can't be real. एक भी terrorist, एक भी आतंकवादी नहीं बचना चाहिए, उनके घर घुस के मारेंगे. Okay. पराठा कैसा लगता पिया है? There's no way this is real, dude. Fuck off. Yeah. It has to be, right? उनका एक भी आतंकी और Okay, फिर ठीक है. If it's here, then it's fine. I don't know. I don't care जब तक funny है. True. Gracie Adams, how are you? What's up? Who the fuck are you? साले बीच में क्यों आ रहा है? भाग यहाँ से. Very depressed. See? One Google search, and here we are. ये कुछ चलाने का तरीका है. I am a love charger. You are my love charger. Guerrilla Apex. उसकी कुछ वीडियो आई है. What age will you take retirement? Dude, I don't have a job. What will I retire from? Life? Then whenever I'm dead, I'm dead. I don't have a job, so how can I get retired, you know?
ऑफिशियल साइट पे आ गई है. Oh, okay. YouTube is not a like in that sense. Then I am retired. भाई ट्राइम ट्रैकर से कम प्राइस में आ रही है गोरिल्ला से. And I think it will be the fastest Triumph out of the 400s, even though 350 होके ही आएगी. पता नहीं, I'm not a fan of this look. I think this is मैंने सुना है this is a very Ducati inspired look. मैंने वो Ducati नहीं देखी है जिसकी look है ये, but वही से तो मेरा और तेरा taste is very different, right? When it comes to motorcycle looks, right? Even though I think this is more in my ballpark, जो चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं than it is in yours, but I am still not a fan of this. Super Duke. Would you play Would You Rather or Kiss Your Tire? I'd play Would You Rather. Depends on who I'm playing it with, right? I love it. Nice. But then I'm not that much of a fan. I do really like the look of the Interceptor, right? Interceptor Continental, whatever the fuck. Look wise, I really like it. As a motorcycle for touring, I think like Himalayan is like really really good. By बहुत ही बढ़िया है. And I'm saying that without having ridden it even once. But उसके अलावा Scram 440 I hear great things about, and that's about it. There's Scram 440. पीरियो हेवन की बात नहीं हो रही है तो ट्रू. भाई डोमिनार अब तो बेचती डोमिनार की वीडियोस क्यों आ रही है? डोमिनार 400 इतनी ज्यादा तो नहीं बिकी, लेकिन बावजूद इसके इतनी पसंद की जाने वाली मोटरसाइकिल क्यों है ये? क्योंकि इसने पार्क क्रूजिंग को अफोर्डेबली एक्सेसिबल बनाया इंडियन मार्केट के लिए. इससे पहले भी स्पोर्ट्स टूरर मोटरसाइकिल थी, लेकिन इसको मार्केट ही किया गया एज अ पर्पसली बिल्ट स्पोर्ट्स टूरर मोटरसाइकिल. 190 प्लस. It was a really good motorcycle at the time. किलोग्राम जो इसका वेट है वो Fuck you, के how dare you? Himalayan 450 is too good. But भाई आज मैं दिल्ली में बाइक चला के आ रहा हूँ, ठीक है, और एक दो जगह पर डोमिनार 400 थी, हाँ, तो एक दो जगह ज़्यादा ट्रैफिक हो गया जितना यूजुअली होता है उससे, बस वाले ने बीच में अड़ा दी, पुलिस वाला आ गया, तो एक दो जगह मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं आ रहा था राइड करके आज. आई कैन इमेजिन भाई हिमालयन में तो फट जाएगी भाई, लेकिन ऐसे करने में, ऐसे राइड करने में यू फील एवरी ग्राम ऑफ इट, जहाँ तक मैंने सुना है. सिटी के लिए तो थोड़ा ज्यादा फील होता है, लेकिन यही वेट इसको हाईवे पे और हाई स्पीड पे इतना स्टेबल बनाता है ना कि जिन्होंने इसको चलाया है उन्हें पता है. सर KTM 390 इट इज़ वेरी स्टेबल, इट इज़ सीरीज से डिराइव्ड, बट आई हेटेड द ग्राउंड क्लियरेंस, बहुत ही लो थी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन बॉबर? द इंडियन बॉबर, again I'm not a fan of bobbers generally. I don't understand them. इंजन काफी एप्ट अमाउंट ऑफ पावर डिलीवर करता आ रहा है. नॉट वेरी एग्रेसिव, नॉट वेरी लीनियर, एट एन वेरी अफोर्डेबल प्राइस. अनलाइक अदर प्रीमियम मोटरसाइकिल, डोमिनार की सर्विसेबिलिटी भी बजाज के वाइड स्प्रेड सर्विस नेटवर्क की वजह से बहुत इजी रही है. विद टाइम थोड़े बहुत चेंजेस और अपडेट्स तो किए हैं बजाज ने इसमें, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, यूएसडी फोक सस्पेंशन, बट लेकिन करंट सिनेरियो के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो थोड़ी सी आउटडेटेड तो फील होती है. पर इसको चलाने की जो फील हीट हो रही थी, हाँ ठीक ठाक हीट होती थी. ये स्क्रैम्बलर भी बहुत ज़्यादा हीट होती है भाई, एंड स्क्रैम्बलर का पंखा इज़ लाउड. आई डोंट थिंक मैंने डोमिनार का पंखा कभी नोटिस करा है सीरियसली. लाइक इसमें था भी पंखा, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, बट स्क्रैम्बलर का पंखा इज़ फकिंग लाउड. जो ओवरऑल कैरेक्टर है इसका वो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग फील होता है. इट ग्रोज ऑन यू, इसलिए इतनी लेजेंडरी है. इट्स नॉट वेरी रिफाइंड though as a bike. It's not very refined. And I hate the lower ground clearance. Scrambler air cooled है. There is a fan, but I think it is liquid cooled as well. देख लेता हूँ. Wait, liquid cooling में there is a fan, right? Generally. So there is air cooled, there is oil cooled, and there is liquid cooled. I think liquid cool में there is a fan. इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन है भाई, इसमें कुछ भी ना है. फीचर्स मॉडर्न लिक्विड कूल्ड, यस, सो इट्स अ लिक्विड कूल्ड एंड देयर इज अ रेडिएटर फैन बिकॉज ऑफ दैट apparently, but I don't know how motorcycle works anyway. There you go. फैन ऑपरेटिंग चलेगा ही, पंखा है तो बाइक में फैन ऑपरेट कर रहा है. बंद कर दे. I thought I broke my bike, but then I saw नहीं वो डिज़ाइन ऐसा एक दो जगह पे. सो मैं देख रहा हूँ अगर कोई ऐसे फ़ोटो दिख रही है अभी तो, बट नहीं दिख रही से फ्रंट से.
I legit thought I broke my bike. And they're not gonna give you the fucking photos. तो इस area से. Some design choices are weird in this bike though. I like the bike overall, but some design choices are really weird. Like why? और सिद्धू ने देखा मैं ना I did not like the experience, like buying experience of the entire bike, ठीक है. बट मैं अलग अलग टाइम पे जाके उनके मारे जा रहा हूँ. कभी मैं कह रहा हूँ उनको मैनुअल दो, कभी कुछ कह रहा हूँ, कभी कह रहा हूँ स्क्रैच आ गया, स्क्रैच हटाओ इसको. चूतियों की तरह सर खाई जा रहा हूँ उनका मैं. और साले सिद्धू मैनुअल उन्होंने अभी भी नहीं दिया. उन्होंने वो दिया है जो एक जनरल सा, वो नहीं होता कि ओ तुमने ये चीज़ ली है. स्पीड खोल यार साले. But by the way, Sidhu is now planning to get a motorcycle himself. वो बाइक है असली. अच्छा बाकी बाइक्स निकली हैं. कहाँ की स्पीड? अबे I'm clicking on motorcycles. Why does it keep showing me scrambled? Oh, okay. अच्छा, it's one of those. Speed is too short for me. कब ले रहा है फिर से तू? आई रियली लाइक दिस कलर. ये जो शोरूम में खड़ा होता है ना, कलर बहुत अच्छा लगता है स्पीड में. अरे यार भागना है भैंस के. क्या टाइम हो गया? 1 बज गया. चल मैं जा रहा हूँ. और आगे जाम हो. तेरी पहली वाली बात क्या थी? स्क्रैम्बलर एयर कूलर. और आगे जाम हो मतलब अप्रैल. ऑलराइट. रेड वन. ओके दैट्स नाइस. चेक ऑन रोड प्राइस में मेरा नंबर मांगेंगे भाई. पता है आई रियली वांटेड एन XC. मुझे XC लेनी थी लिटरली, बट थी ही नहीं. एंड दे लाइक पता नहीं आएगी नहीं आएगी. सो आई डिडंट वांट टू. XC बहुत अच्छी लगती है देखने में, राइट? आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट लुकिंग ट्रैम्फ, मतलब जो 400 की रेंज में है. लाइक दिस लुक्स रियली गुड. Really good looking. Damn. ट्रैकर लेने का मैं सोच रहा हूँ. ओह नाइस डन. ट्रैकर हैज़ द मोस्ट डिस्टिंक्ट लुक. आई थिंक XC इज़ द. अच्छा एक चीज़ बता रहा हूँ मैं. आज मैंने नोटिस करी, कई पानी में आती ना बाइक, तो क्योंकि इसमें हाई मड गार्ड आता है XC में और X में भी, तो आगे पानी फेंकती है ये, राइट? समझ गई क्या कर रहा हूँ मैं? तो तुम बाइक्स पीछे पानी फेंकती थी यूजुअली, और आगे के हाई मड गार्ड्स का आई एम नॉट यूज टू देम एट ऑल. सो ऐसे बूंदे बूंदे आगे जाती है पानी की. That's fucking weird as fuck, dude. तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो, कोई चल रहा हो, चूतिया आप. But yeah, whatever. It's inconvenient if there's someone in front of you, dude. What are you gonna do? Woman stand, woman go. What? Man stand. Watermelon. सही कह रहा है. भाई लेकिन सच बात तो ये है, देखो अगर मेरे पास 15 lakhs होते ना, I would have still probably gone for this. This looks really good to me. But I don't give a shit. Like whatever I'm interested in, I talk about. But you know, most of the times I'm talking about this. I like this, but I don't give a shit about it. I'm just letting you guys know. So इन्होंने पीछे से बहुत ज़्यादा उठाई है comparatively, okay? And आगे से अंदर करी है. So that's the major difference. And of course the exhaust is obviously the thing. Ooh. Yeah, it's either the red or the silver one. I think the silver one is the best one. रहने दो 15 लाख होते तो भी आप स्क्रैम्बलर ही लेते, और बाकी पैसे
कहीं और लगा देते. You mean 400 लेता? True. That's probably true. I wanna say something, but I don't wanna talk shit about this guy. दिखाता हूँ मेरे को. ये बात मैं बोलूँगा फिर मैं जा रहा हूँ, ठीक है? I don't wanna talk shit about him because by all means, I don't know the guy. Might be a really nice guy. So please remember, I'm not talking about the guy. Okay, I'm talking about the thing. You got it? So I'm explaining basically the concept. Okay, so please remember that. So there's this video which is like whatever video. ठीक है, मेरे ऊपर नीचे करते हुए आ गई मुझे, but like it's like there are 4.6 million likes, so fuck off, obviously आएगी, right? So there's this video. के फेंके थे नदियों में टूटते तारों से तुझे मांगा. गाने बंद करो यार. मैंने सपने देखे थे बस तेरे पक्के. के ओ भाई, वो मतलब क्या बंदा है, वाइफ से भी प्यार करता है, माँ से भी प्यार करता है, और औरतें खाना बना. Okay, no, this is not what I'm talking shit about, right? So you get it. It's a feel good video apparently. There's this philosophy guy who I follow on Instagram, ठीक है? I just recently started following him. Look at the comment. वो सब तो ठीक है, लेकिन रोटी को स्पैचुला से पलटा जा रहा है. मतलब, and it's not this guy. Again, like I said, okay, I'm not talking about a guy. I'm talking about this whole concept and this rationalist philosophy or ये सारे, like, in order to be smart, people become really stupid in their attempts in being smart. And I'm not saying he's not a smart guy. He might be a very smart guy. He is very well aware of philosophy and stuff, right? Like, you just suck the fun out of everything. Again, not the guy, the philosophy and the science and the world of that world. You just suck the life out of life itself. What the fuck are you guys doing? Like, there's a nice feel-good video. Why did the chicken cross the road? Because there was a black guy walking behind him. So, बाकी के कमेंट्स यू सी, दूसरों को देख के खुश होना है मेरे को आता है. ओके, अ लिटिल सेल्फ डिप्रिकेशन, राइट? मैं क्यों स्माइल कर रहा हूँ? लाइक दिस पर्सन जस्ट रियलाइजेस, ओके, इट्स अ फील गुड वीडियो, देयर इज अ हार्ट, सो एवरीथिंग इज जस्ट फाइन. बट दीज फकिंग फिलोसॉफिकली minded idiots to get to the fucking idiot's house. So it just really pissed me off watching this. भाई chill मारो ना. Like, I cannot comprehend. How can you watch this video and be like, oh, so how? मैं इतनी देर से, मैं ना बहुत ही हल्के हल्के में बोल रहा हूँ ये बात. रेसिस्ट पने ने पुराना जोक खत्म कर दिया. No, that was a Louis C.K. bit actually. This really pissed me off. You guys have nothing to say about this, really? Okay. Maybe I'm just a fucking asshole. Okay, who hates people? And everyone else as well. Chalo, it's time for me to fuck off. By the way, how are you, Andre? Thanks for joining stream, buddy. But it's kind of time for me to fuck off. Bye, Paul. Paul तो वही है जो जेजी की वीडियो बना रहा था. Okay. You guys are idiots. मैंने इतनी मस्ती सिखाई, तुमने उस पर कोई वो ही नहीं करा. क्या नहीं करा? रिएक्ट नहीं करा. गंदे लोग. मैं बताऊंगा ये तुम्हें आज के बाद कुछ बात अच्छी बातें नहीं बताऊँ.
I forgot, guys. Thanks for joining stream. Take care. See you tomorrow. Bye.